Okay. How much time until you get Thapar? Better very soon. We got a mail from Dean of Student Affairs, Dean of Academic Affairs. They are working on it. You know, to get you the Thapar email ID. Soon you will get it. Very soon you will get it. Fine. Now listen one thing, third thing very carefully because there's some relevant issue with all the students, many students. Those who have missed initial classes, okay, and they have joined late. Number two, they had some problems regarding internet. They are from the hilly areas, from remote areas, or some other Jammu Kashmir areas, suppose, and they have internet issues. Need not to worry. If you can please, if you can please make a group by finding all those students, okay, those who have missed, number one, and those who have joined late, number two, number three, they have a relevant some net connectivity issues. So if can they make a group like 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, any students, I can arrange an extra class for those students as per their convenience, not as per my convenience. If you can, if you can available yourself at 9 o'clock in the evening or 10 o'clock in the evening, I don't have any problem for you, beta. All of you. And if you want me on Sunday, no problem. Okay. So it's my request to everybody, please chat, or after this class, you can discuss with the whole group. Those who have missed, joined late, and any relevant or irrelevant issues. Yeah. I don't want to get into the issues. कुछ भी issue हो सकता है आपका बेटा वो. Okay, don't worry, just let me know. I'll repeat each and everything which we have covered in initial classes. Okay, so now you have to inform me. So I've shared my email ID, I've shared my mobile number. That's my WhatsApp number, beta. So you can always WhatsApp me, you can always call me, beta, for these kind of things once. But make it sure that everybody is involved, those who have missed or XYZ जो मैं रीजन बताया मैंने आपको. Okay, सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपका जो भी आपका सुटेबल टाइम होगा, जो भी आप बोलोगे उस क्लास उस पे हो जाएगी बेटी. ओके, चलिए. एनीवे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेस लेक्चर इफ ऑल द कंटेंट्स आर बीइंग discussed with you. So today I'm going to wind up this sustainability issues, all kind of stuff. Okay, so I think so in the last lecture I made this thing very clear to all of you. Okay, what is passive approach, what was the active approach, and what was constructive approach, what was this approach. Is that okay, everybody? Done. I'm moving forward right now. Just hold on for. Okay, I want to start. So I want to answer okay, all of you. So this is understanding of UN development agenda. I'm going to brief this thing very fast.
So basically, I think so. In the last lecture, we discussed about the how the overall concept actually led to the sustainability throughout the world. So I've explained to you in the last class how the everything which you are governing, right from your pen to everything technology, how it's leading to sustainability, and how the role of computer engineering and each and every branch is actually, engaging or involving in the sustainable development. So but basically it all started in 2000, start of new millennium, when the leaders had gathered at UN to shape a broad vision of, like, to have a broader vision. So this broader vision actually led to the development of 8 MDG, Millennium Development Goals. The fundamentals started from here. Which fundamental? Sustainable development goals of the world, how they started. It started in this particular meeting when they have set a millennium development goals, MDG. So they set 8 millennium development goals, but I'm going to tell you how these MDG, millennium development goals, actually transformed into sustainable development goals within 5 or 10 years. What actually happened? Okay. So these were the millennium development goals. You can go through. I'm going to pass the slides to you. It's up to you. Okay. So this is to eradicate extreme poverty, universal primary education, promote gender equality. All kind of things were involved in the millennium development goals that was set at UN. That is for 15 years. But they smelled a success of global actions. Means when they set these goals, they smelled all where this MDG goals were implemented. So this means they found that global action can really work. One fundamental, and it is like global action is only path to ensure that new development agenda leaves no one behind. Okay, so new agenda should be truly universal and transformative. So they thought it to be truly universal and transformative, and then they seek a sustainable future for that. So this is something I want to discuss with you. They thought, after a thought-provoking ideas or discussions and implementations, the MDGs, the Millennium Development Goals, they did not consider the environmental issues. This is a main burning issue throughout the world. That is emission of greenhouse gases, access to clean drinking water, and management of water resources. They thought, however, these three things, which is actually going to save this particular planet, and any kind of technology or thinking, including computer, electrical, to any particular branch, ultimately leading to these three things. So they wanted, okay, these three main issues are not being, you know, taken care or concentrated upon in MDG, Millennium Development Goals. So that's why they thought there should be now a concept of sustainable development. So they need to consider the relation between the nature and the society, and this happened within 5 or 10 years. What? The MDG converted to SDG, Sustainable Development Goals, within 5 years. Now, my question goes to you: how MDG transformed to SDG, Millennium Development Goals to SDG? What was the need? Number one. Number two, how the global thinking changed in the last 10 years. Number three, very important, how the role of technology has intervened into the system. I'm going to tell you in this lecture, the last lecture of sustainability, how the emission of greenhouse gases, how the COE comes into picture, how the electrical comes into picture, how mechanical comes into picture, how the civil comes into picture, access of clean drinking water, how COE comes into picture, management of water resources, how COE, how electronics, how electrical, how civil, how chemical comes into picture. So this is something, everything is now going to target or hint towards the sustainable development. So this is basically, you can go through later on this thing, the international proposal of transforming of words. So you can go through the link which is being provided over here. Okay, this is going to tell you the basic, you know, agenda for sustainable development, which is being given through this particular link. Okay, so that's why the transforming our world, that 2030, that is called Agenda 2030 for sustainable development. So this is something
You can go through this very fast. Now, if you can go through this very fast, okay, I'm going to explain the things to you, all of you. Better link again. I'm going to show the link, but I'm going to share these slides with you also, better. You not to worry. Okay. Hold on, better. Hold on. Okay, link will be shared to you, and all slides will be shared to you. Okay, see this. If you want to see link again, this is a link, but you need not to write the link, or you can either click the photo of the link, or I can share the link later on, because slides have been shared on the LMS. You can go through. So this is the agenda 2030. Now listen one thing very carefully right now. Now this is the origin of agenda 2030, called UN United Nations 2030 agenda. Now in this agenda, it is being targeted that how everything is related to CO2 emission, and how everything is related to access to clean drinking water, and how everything is now going to hit towards the management of water resources. Okay. Now I'm going to give a very simple example. Very simple example. Okay, I'm not taking COE into picture, not COE into picture. I'm taking some other branch into picture. Okay, so how it is being related to sustainable development, जो आपके क्वेश्चन को आंसर दे देंगी जो आप पढ़ रहे हो आपके सामने वाला. ओके, सो बेसिकली सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बात बता रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना बेटा. नॉट सिविल इंजीनियर्स, आपको पता है आपके घर की बिल्डिंग्स बनती हैं. ओके, और एक आपके फ्लाईओवर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं. ओके, तो उस बिल्डिंग में सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहता है? सी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और कैसे सीओई को बाद में डिफाइन करूंगा, कैसे मैं बाकी ब्रांचों को डिफाइन कर रहा हूँ बेटा. नाउ सिविल इंजीनियर्स में क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स या फ्लाईओवर्स बनते हैं, जो भी बन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जब भी वहां पे क्रैक आता है उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर विद टाइम, तो क्रैक्स इज समथिंग विच यू नीड टू कंसंट्रेट अपॉन, बिकॉज क्रैक के अलोंग बिल्डिंग वीक होनी शुरू हो जाती है. तो इट इज बीइंग सेड कि क्रैक बढ़ जाता है तो वहां पे बिल्डिंग क्लास हो जाएगी, जो आपने बड़ी बार ऑब्जर्व भी किया होगा, बिल्डिंग गिरी है बहुत ज्यादा. नाउ अब ये CO2 इमिशन, ये XYZ को कैसे, सिस्टम डेवलपमेंट को कैसे टारगेट कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको छोटी सी आपको. नाउ जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपके, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा चीजें वाली. नाउ सिविल इंजीनियर्स दे आर वर्किंग क्लोज कोलैबोरेशन विद बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स. इन व्हाट सेंस? Now, biotechnology engineers, they are into a growth of some bacteria, and these bacteria, when they put in the cement or in the crack, they are going to generate calcium carbonate. See, once they are going to generate calcium carbonate, the calcium carbonate is going to fill the crack. And the one the crack is filled, so can I say the building life is increased? The building life is increased, so can I say it is a relative example of sustainable development? Because now you are increasing a life of a building, okay, which otherwise is of like auto repairing buildings are future, no doubt. This is something I'm talking about. So see this, you have never thought of biotechnology into civil engineering. How come? So they are into producing, or they are into, sorry, growing into more efficient strains of bacteria, which can actually generate more amount of calcium carbonate. Say that without any modification of a building, without doing anything, so you are just putting a bacteria, and the cracks are being filled through calcium carbonate, which are being generated by the bacteria, and the building life is increased. So this, if the building life is increased, so can I say you have saved a reasonable amount of energy, which could have spent it, we could have spent on the development of new materials. So if you have spent saved energy, the energy is being saved in terms of the CO2 emission, the greenhouse gas emissions. So see what I'm saying over here. So everything,
which we are talking in terms of sustainable development is going to leads towards the three issues which are being taken care in the sustainable development. So that's why I'm telling you, in after doing your BTech or MTech or anything what you are going to do, you go outside India. Even in India also the concept is now booming, but go to outside India, better you will not get your jobs until or unless you define that are you going to achieve sustainable development through your branch COE. This is exactly very clear. I have been to Europe, I have been to many countries so many times. सो मैं उस एंगल से उस में गया हूं और मेरे को वहां पे मिला भी बंदों को जाके वहां पे. सो दे डोंट वांट कंप्यूटर इंजीनियर्स. अरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, बार बार बोल रहे हो कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हूँ. बेटा आपको पता है कि वो वहां के +2 वाले बच्चे आपसे बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं. +2 5 इयर्स का बेटा, तो 5 इयर्स के वहां पे कोडिंग शुरू हो जाती है बेटे. और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, बुरा मत मानना, मैं आपके सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, अभी तो आप नए आए हो सिस्टम के बीच में. आई एम टॉकिंग अबाउट योर सीनियर्स. मैं उनको फर्स्ट ईयर में कुछ प्रोजेक्ट करवाता हूँ जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट को क्या क्या होते हैं यहाँ पे, ताकि पता लगे कि इस सब्जेक्ट में और क्या कुछ होता है. बेटा मेरे को कहाँ पे स्टॉपेज लगती है, 99% स्टॉपेज कहाँ पे लगती है, जब मेरे को बीटेक के बच्चे ये बोलते हैं फर्स्ट ईयर के कि सर कोडिंग नहीं आती है इसलिए हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे. सर ये कोडिंग नहीं हो पाएगी, नहीं तो सर आइडिया बहुत अच्छा है आपका, आई गोइंग टू लेट यू नो माय आइडियाज लेटर ऑन. और वहां पे एक 6 7 क्लास का बच्चा कोडिंग कर रहा है. तो अभी आप मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ इस चीज के लिए कि यू आर बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यू आर से नाउ सर आई कैन डू द कोडिंग. सो व्हेन यू गो आउटसाइड, अरे they can have this coding from the 10th class student in their country. What else you are contributing? And what else you are contributing, if you can think their +2 or their BTech cannot contribute. What is that? How this technology which you have learned from your 4 year degree can be implemented towards sustainable development. Which kind of sustainable development? उनको ये बताओगे सर this particular software, if we can apply this thing in your country, this can really save the CO2 emission. Okay, they can learn. Now you can say, sir, this technology, this software, this program, this coding can be applied to this area of your country, and this can reasonably save the water resources, or this can minimize the resources, minimize the water consumption, and they can hire you. Can 10 + 2, can 10th student from their country can do this kind of things? No, they can just do the coding. This is the difference I'm talking to you. प्लीज माइंड इट, माई इनिशियल क्लासेस आर देयर. सो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ अपना रोल, डिफाइन कर लो बच्चे. क्या रोल है आपका? आधे बंदे तो 4 साल इसी मत्थे में रहते हैं, मेरे को करना क्या है, बस कोडिंग सीखनी है, सॉफ्टवेयर सीखना है, मेरी सीओई होगी, मेरी प्लेसमेंट हो गई. ठीक है, आप यहाँ के लिए बहुत बढ़िया, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया आप. पर इंडिया में भी ये सही चेंज हो रहा है विद टाइम. जब तक आप पास आउट करोगे, ये 4 इयर्स ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा आपके लिए बेटा. यू नीड टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट ओवर हियर. क्योंकि आप क्या करोगे, बैठ के कोडिंग तो करोगे नहीं, कहीं ना कहीं तो अप्लाई होगी वो चीज. और नहीं तो आप रैट रेस में हो, जो बाकी बंदे कर रहे हैं उसी में बैठ जाओ, 50,000 की जॉब कर लो, कोई चक्कर नहीं है बच्चे. बट यू नीड टू बी डू create extra things. कैसे this software can really help the things in the India. तो इसमें अगर ये टेक्नोलॉजी लगाएं तो हमारा CO2 emissions और कम हो जाएगा. You are being hired immediately, higher package. So that's why the sustainable development, see this here, there are 3 dimensions of sustainable development. और मेरे ख्याल से तीनों dimensions आपको define कर चुका हूं, जो मैं आपको बता चुका हूं with example. Economic growth, social inclusion and environmental protection. See this, आप social काम नहीं करोगे डिग्री करके, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है, ऐसा नॉट. और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो थर्ड पिलर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो भी होना बहुत जरूरी है बेटे. तो मेरे ख्याल से मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत क्लियर कर दिया बच्चे ये चीज कि आपका रोल एज ए कंप्यूटर इंजीनियर कहाँ पे डिफाइन होता है. क्योंकि आप सीओई वाले हो तो मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ. अगर मेरी क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स बैठा होता, इलेक्ट्रिकल, सिविल बाकी बैठे हो, तो मैं उसको ऐसे डिफाइन करता. सो सी द 3 pillars or 3 dimensions of sustainable development.
इकोनॉमिक ग्रोथ, नो डाउट यू नीड नॉट टू कंपनसेट, ये करनी है. सोशल इंक्लूजन यू हैव टू, because you are working in a social environment. Then environmental protection. So this is something, three pillars, three dimensions of sustainable development, and how your core application is going to target these three things. So ये तीनों कैसे टारगेट करनी है बेटा, सुनो मेरी बात. या तो अपनी सीओई को जहां पे अप्लाई कर रहे हो, कहीं सोशल इंक्लूजन के लिए इंक्लूड कर रहे हो कि सोशल वेलफेयर के लिए है. सोशल वेलफेयर के लिए क्या है, जो मैं आपको बताता हूं, जो अभी बताया मैंने आपको एग्जांपल दी, कि ऐसी कोई ऐप बनाई जाए जो फार्मर्स के लिए इतनी ज्यादा सुटेबल हो, तो ये सोशल कॉज के लिए आ गई है. नंबर वन एप्लीकेशन. नंबर टू, आप कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो CO2 रिलीज और सिस्टम में ऐसे वर्क कर रहा है कि एफिशिएंट एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, CO2 रिलीज बच रही है. तो थर्ड एलिमेंट आ गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. And now your branch, your coding, your program, your software you have developed for industry, और उसमें आपने कुछ ऐसा इंप्लीमेंट कर दिया कि इंडस्ट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है. पहले वो उस पर 20 रुपए स्पेंड कर रहे थे, आपकी टेक्नोलॉजी लगाने के बाद वो 15 रुपए स्पेंड कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से आपका जो सिंपल सॉफ्टवेयर वहां पे लगा है, जो आपने बनाया है एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, वो आपको पर रन 5 रुपए ग्रो दे रहा है. और वो 5 पर रन पर साइकिल 5 की ग्रोथ दे रहा है. तो ये लाखों और करोड़ों की ग्रोथ है एक 1 ईयर की बात करें अगर. सी, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं सिस्टम डेवलपमेंट क्या बोल रहा हूं बेटा. ये तो ना किसी बुक में है बेटा, जो सी मर्जी बुक पढ़ लो बेटा, ना कहीं और मिलेगा आपको. दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ कि क्लास में क्यों आना चाहिए. क्लास में इसलिए आना चाहिए कि जब टीचर अपने रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि हाँ एग्जाम्पल को कोलेट कैसे करना है, एंड दिस इज द ओवरऑल फंडा फॉर इंजीनियर्स टू कम इनटू क्लास एंड इंटरेक्ट विद योर टीचर. ओके, so this is, like I gave you example, these are the 17 SDG, sustainable development goals. SDGs, sustainable development goals, which actually are being transferred or carved out from the MDG, the Millennium Development Goals, how they transform into SDG. So you can go through later on. If there's still any problem, you can always call me. You can always discuss with me. But this is a well connected, well explained, self-explanatory are there. See this. If you see 13 point over here, climate action. This is something, given a more importance over here, climate change, because nowadays you see that everything is now oriented towards or shifted towards the climate actions. And if you really, after this my lecture in the evening, whenever you're set free, better just find in other countries computer engineers, how they are finding their maximum jobs in other countries. You see one area coming up over there in the net, कभी ढूंढना फिर मेरे को बताना. Climate actions, climate change. The maximum computer engineers, they are finding their jobs in this area in other countries. Okay. And then a 6 point, clean water and sanitation. And this is something other countries are really working on, really working on. And wherever in India, I think so, need not to tell beta, need not to tell you. Hardly, few percentage of the people are there through 130 crores who have a clean access to clean drinking water and sanitation. I think so, need not to explain. Sanitation, effective sanitation, still you go deeper into the, villages or somewhere, you are seeing that the lack of sanitation, clean drinking water. So and you have this opportunity in India, because India में हमारे पास इतनी डेप्थ है मार्केट की, आप अभी भी उसमें पेनिट्रेट कर सकते हो अपनी टेक्नोलॉजी को लेके. आई वांट टू टेल यू बेटा, लेटर ऑन मैं बताऊंगा, ऐसे से फंडे बताऊंगा, काम कर लो बेटा. और मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के ऐसे आइडियाज हैं, कोई पहले काम कर गया वो पहले एंटरप्रेन्योर बनेगा, और अभी तक मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आए जो मैं कर रहा हूं. बट बच्चे नहीं मिलते काम करने के लिए, स्टूडेंट नहीं मिलते. क्यों? उनके टारगेट फिक्स होते हैं. मेरे को सर एक व्हाइट कॉलर जॉब लेनी है, एक प्लेसमेंट लेनी है, बस काम नहीं करना.
मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो प्रोजेक्ट मेरे पास बच्चे आए वो एक एक 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए ना आए। मेरे पास कम से कम ओके अभी नहीं बेटा, मैं आपको आइडिया बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में। पहले आपको बताऊँगा मैंने कौन से प्रोजेक्ट थापर में करवाए हैं और क्या-क्या करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास उसी की है आपकी, ताकि आपको कुछ क्लियर हो कि एनर्जी एनवायरनमेंट इससे थ्योरेटिकल नहीं है। इसमें बच्चों ने किस-किस लेवल का काम किया मैं आपको बताऊँगा बेटा, नो डाउट। ओके? सो दिस इज़ SDG and this is another way to look at SDG, the 5 P's, because 17 SDG, they are no doubt being taken to this particular 5 P's, that is people, prosperity, peace, partnership and planned. How? See this. No doubt ultimately are these 5 are being concerned or overall always. चाहे आप क्लाइमेट एक्शन की बात कर लो, चाहे आप क्लीन ड्रिंकिंग की बात कर लो, चाहे आप सैनिटेशन की बात कर लो, these things are being there because you're targeting these three first of all. Which one? People, planet and prosperity. Okay, then peace is by default is there. Yeah, when all these things are there, by default there's a peace. And this is something very important, the partnership, improving international cooperation. Why? Because this is something is going to give you the technology boost. What technology boost? अरे भाई, अभी जर्मन कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है इंजन की। ओके, और देख लो वही मोस्टली 90% अपनी इंजन, कार इंजन की जो है टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो यू नीड टू हैव दिस पार्टनरशिप्स। और इंडिया में हम आयुर्वेदा है, और आयुर्वेदा हम पेंट्रेट कर रहे हैं हर जगह पे। मगर एग्जांपल दे रहा हूं आपको इन चीजों के बारे में। सो दिस इज समथिंग पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड, सो दैट्स व्हाई the main goals they are focused on the 5 P's: people, planet, prosperity, peace and partnerships. So these 5 aspects are no doubt, mean to say, are interdependent. Okay, so this is something I want to say, and ultimately I can say this COE, which your branch is like COE, can play an important role. What I'm talking right now over here can play a vital role in every engineering branch. And that's why in Thapar, if I've gone through the various branches, you have computer and electronics, you have electrical and computer engineering, you have this and computer engineering. Have you ever focused upon why every branch last 5 years there was no any kind of combination? Electronics, computer engineering, electrical, computer engineering. So why doing this? Because if we have really gone through in the last 5 years before that, they are seeing that कि यार 60 or 50% एप्लीकेशन तो इस ब्रांच में कंप्यूटर की है। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट जोड़ के नहीं बैठ जाओगे आप, यू हैव टू सी द रिस्पॉन्सेस। इलेक्ट्रिकल सेम थिंग, मैकेनिकल सेम थिंग, chemical same thing. I can say civil the same thing, because now a lot of applications are coming out of computer engineering. So if you really see that okay, these branches are focusing that there should be more branches towards these kind of things, then you must recognize being a core computer engineers के मेरी applications कहाँ पे हैं, कि मैं इलेक्ट्रॉनिक में क्या रोल प्ले कर सकता हूं, मैं मैकेनिकल में क्या रोल प्ले कर सकता हूं, मैं सिविल में क्या रोल प्ले कर सकता हूं, मैं इलेक्ट्रिकल में, मैं इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या रोल प्ले कर सकता हूं। और ये चीज नहीं क्लियर है तो दिस इज बाकी ब्रांचेस आप में घुस रही हैं और आपको पता नहीं कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, और इतना पता है कि इस सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट करने हैं, नेक्स्ट में 6 करने हैं, उसके 6 करनी है, प्लेसमेंट हो जाएगी बस। सो इफ यू वांट टू वर्क ऑन सस्टेनेबिलिटी, माय क्वेश्चन इज थिंक व्हादर यू आर सस्टेनेबल। अपनी सस्टेनेबिलिटी का पता नहीं है, बुरा मत माना, मैं सब सीनियर्स की बात कर रहा हूं, अभी तो सिस्टम में नए हैं आप बेटा, डोंट वरी। ओके, सो अपनी सस्टेनेबिलिटी क्लियर होनी बहुत जरूरी है आपको बेटा। मैं बोलता हूं हमेशा कंप्यूटर इंजीनियर को, प्लीज प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। सारी ब्रांचेस आप में घुस रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स घुस रही है आके, ब्रांच शुरू हो गई है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर वो शुरू हो गई, वो घुस गई आपके पास आके, क्राउड बढ़ गई है, क्राउड बढ़ गई है, तो आप तो कोर वाले हो।
कोई ये नहीं बोलेगा सर मैं तो उनसे ऊपर हूँ। अरे आपसे बढ़िया परफ़ॉर्म करेगा वो, बिकॉज़ अब उसके पास 2 चीज़ें हैं, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो वर्ड चाह रहा है कि मेरे को एप्लीकेशन चाहिए सिस्टम डेवलपमेंट में जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो। आप तो अपनी ब्रांच में बैठे हो। इलेक्ट्रिक वाला आपसे बेटर रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का जो ब्रांच में वो निकलेगा बाहर, उसको ये पता है कि मेरे को इलेक्ट्रिकल में कंप्यूटर कैसे एंगेज करनी है, कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल से एंगेज करनी है और एप्लीकेशन ओरिएंटेड कैसे होगी आपको। और कंप्यूटर वाला 4 साल तक अपनी सॉफ्टवेयर में घुसा रहता है। मेरे को कोडिंग करनी है, मेरे को सॉफ्टवेयर करना है, मेरे को वो करना है, और 90% को ये नहीं पता हो कि मैं इसको अप्लाई कहाँ पे करूँ। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़, आपके पास अभी टाइम है बेटा, अब अपनी फर्स्ट ईयर से शुरू कर दो ये चीज़ें कि मैं इसको जो भी कुछ करूँगा, कोडिंग, कुछ भी प्रोग्रामिंग करूँगा, एआई करूँगा, चाहे मशीन लर्निंग करूँगा, वेयर टू अप्लाई। और आपकी मशीन लर्निंग जो ऐसी ब्रांच है, वो एक तरह का वो, एक तरह की वो रीढ़ की हड्डी है, लाइक लाइक दिस बैकबोन। बाकी सब ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस में मशीन लर्निंग की अप्लाई होती है, मशीन लर्निंग आपकी। ओके, सो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, अगर आपके कुछ पॉइंट्स हैं, सो दिस आर द आई यू कैन गो थ्रू बेटा। नाउ आई थिंक सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू लॉट about these kind of things, so it's up to you, can go through, focus on people, focus on planet and the prosperity, you can go through, because I have gave you certain examples, okay, and relevant examples. Okay, like ensure availability and the sustainable management of water and sanitation for all. I think so I gave you with examples. The line is written over here. Now see, this is the difference beta for attending a class. Everything which I'm giving to you, it's not written on slide में written है। अगर मैं slide वाला ही पढ़ा दूंगा तो बच्चे बोलेंगे सर आप क्यों आ रहे हो क्लास में, हम स्लाइड पढ़ लेंगे। ओके, सो बेटा स्लाइड्स में जो नहीं है मेरे को वो पढ़ाना है। वो वही बोला था मैंने आपको कि इंजीनियर्स वो पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं जो मैं बता रहा हूं बेटे, एप्लीकेशंस। अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, मैं बता चुका हूं कि हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर द एबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, गिव एग्जांपल, गिव जस्ट जस्टिफिकेशन, फंस जाओगे। सो पहले मैं आपको इसकी रियल फील्ड फील्ड कंडीशन पे एग्जांपल दूंगा आपको कैसे करना है चीज के लिए। ओके, सो फिर आपको पता लगेगा कि यस मेरी ब्रांच यहां पे जस्टिफाई हो रही है बेटा। सो दिस इज समथिंग विच यू रियली कैटर अपॉन व्हेन यू आर इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच, कि मेरे को घुसना कहाँ कहाँ पे है सर, मैं अप्लाई कहाँ पे करूं। कुछ बच्चे आके बोले सर मेरे को सिविल में घुसना है, मेरे को सिविल की एप्लीकेशन बताओ सीओ की। सो दिस इज एक्चुअली लीडिंग टू व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग फ्रॉम द लास्ट 3 लेक्चर, सस्टेनेबिलिटी, जो पूरा वर्ड गवर्न कर रहा है चीज। और यही है सस्टेनेबिलिटी की सक्सेस। लास्ट में अगर मैं बताऊं कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर्स अपने आप को डिवाइड करके लेके आओ कि सर मेरे को घुसना है इलेक्ट्रिकल में, सर मेरे को इंस्ट्रूमेंट्स में घुसना है, सर मेरे को केमिकल में घुसना है, नाउ टेल अस द एप्लीकेशन में किस एंगल में काम करूं मैं सर। तो देन सस्टेनेबिलिटी फंडामेंटल which the UN all this like states they have envisioned, so this is successful because you are ultimately working for what, sustainable development through different areas. See the mixture now. A computer engineer is not a computer engineer, electrical is not an electrical engineer, not going to apply. एंड मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि स्कोप अभी भी वाइड ओपन है बेटे, वाइड ओपन स्कोप इज देयर, यू कैन रियली पेंट्रेट इनटू दिस स्कोप राइट नाउ। अभी भी इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड जंप इनटू दैट। डोंट wait for the second year to start. Okay, so this is something I have explained to you. Need not to worry, I have you know explained to everything, rest all lines are there for you. और दूसरी बात बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये लाइनें आपको एग्जाम में अगर आती हैं तो ये रट्टा मार के लगनी है। नो 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 नो, जो यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड किया अपने दिमाग से वो लिख के आना है आपको यार, विद एग्जांपल्स। ठीक है, और ये थिंकिंग छोड़ दो कि ये 15 पॉइंट दिख रहे हैं और है दो भूल गए तो क्या हो जाएगा मेरा, फिर दोस्तों की तरफ देखते हैं, वो दूसरा पॉइंट क्या था भाई, क्यों भाई ये 15 पॉइंट में वर्ड खत्म होना है।
ये 15 में 5 पॉइंट लिख दो। वो कौन से 5 पॉइंट जो अभी आपको अंडरस्टैंड हुए हैं मेरे थ्रू, और बाकी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो। अदरवाइज इट्स माय फेलियर कि आपको नहीं दे पाया। हाँ, प्रॉब्लम है, मोस्ट वेलकम, कॉल मी, गिव मी मैसेज बाय मेकिंग ग्रुप, फिर से इसको रिपीट करेंगे, नी नोट टू वरी। ओके, सो बाय डिफॉल्ट लास्ट पॉइंट तो पता ही है, टू प्रमोट द पीसफुल एंड इंक्लूसिव ऑफ सोसाइटी सिस्टम डेवलपमेंट, प्रमोट प्रोवाइड access to justice for all, these things are there because by default when you have effective penetration of sustainable development everywhere, टेक्नोलॉजी आएगी, डेवलपमेंट आएगी, तो नो डाउट ये चीजें आएंगी। ओके, देन पार्टनरशिप का मैं आपको बहुत बेटर एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे ख्याल से। देन इफ यू कैन राइट समटाइम्स, सपोज दिस क्वेश्चन कम्स टू पेपर, सपोज, then you can really give an example of Germans, how they are making a technology of engines and how they revitalize the global partnerships for sustainable development. Yes or not? अब देखो यूरो 6 टेक्नोलॉजी आई है, यूरो 6 एमिशन वाली आई है ना अभी, ये BS6 आई है, यूरो 6 है, BS6 है, यू जस्ट कंफर्म बिकॉज़ वो है। सी दिस, नाउ इट्स नॉट लाइक दैट कि वहीं पे अप्लाई होगी, नो 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 नो, यस BS6 हमारी BS6 है बेटा। अब हमारी BS6 जो है, जो यूरोप की है उससे बहुत ही डाउन है, इफ यू कैन एग्री विद मी, जो यूरो एमिशंस हैं। Yes, this is Bharat emission norms, I know beta, but this is Bharat emission norms. But if you know the Euro emissions, which are very, very tough as compared to BS. Okay? और मेरे ख्याल से वॉक्स वेगन का सबको केस स्टडी पता होगा, और नहीं पता तो पढ़ के आना वॉक्स वेगन वाला नेक्स्ट क्लास में, कि how the company was fired when they have manipulated the emission norms. The company was ruined, totally ruined, Volkswagen. See, now I'm penetrating all the computer, mechanical, electronic engineers gone, because जब कंपनी ही शंटिंग ऑफ हो गई थी पूरी, तो thousands of all these engineers were shunted off. Manipulations were there, emissions were there in the Volkswagen. Okay, so I think so I stop here, and this is all about the sustainable development. In the next class, I'm going to tell you the projects. So before actually going to the case studies and other particular thing in this particular yes, Volkswagen banned in America, because beta, this is something, America is very tough in terms of in these things. You cannot, well, forget about Volkswagen beta. If you take Indian fruit by default to these countries, वो आपका वहीं पे फिकवा लेंगे एयरपोर्ट पे. You cannot carry a single nut, grape, or any piece of fruit of India to these countries. They never allow this particular, this company, these particular foods to enter their, like environment, because they thought it's infected. I know the daughter companies are not banned because there's something, going politically also, no doubt, but they have suffered a billion dollar loss. Okay, so I stop here, bete. I stop here. Okay, because the time is almost done. So thank you very much for patience listening, beta, and I hope so I made you clear all the fundamentals in this aspect. Okay, so next class we will talk about projects. So wish you good luck, all of you, beta. Take care. Okay, and just let me know the times or all kind of stuff we want to me have an extra class, and you can call me anytime. Take care, beta. Take care, all of you. Thank you, beta. Thank you all.